So today we are going to start with Raoult's law for solution containing volatile solute. When I talk about volatile means which will get converted into vapor state. That means in this solution, देखो volatile हमेशा liquid होता है, ध्यान में रखना, volatile is always a liquid. That means you have a solution. That means you have a solution. कैसे form किया हुआ है solution? You have a liquid A as a solvent. Liquid A as a solvent, and you are adding a volatile solute which is liquid B. Correct? So now in this case, the vapor pressure, the total vapor pressure will be contributed by liquid A as well as liquid B. Yes or no? So A तो contribute कर ही रहा था, यहाँ पे B भी contribute करेगा. तो ये थोड़ा special case हो गया. Last time we have done Raoult's law for the solution containing non-volatile solute. In that case, the vapor pressure was only due to solvent molecule. But यहाँ पे क्या हो रहा है? The vapor pressure is due to component A, solvent molecule as well as solute molecule. Correct? Okay. So we have liquid A in the solution and we have liquid B in the solution. Now, if I talk about, consider the component A and B with a mole fraction XA and XB, correct? And P naught A. P naught A is the vapor pressure of pure liquid A and P naught B is the vapor pressure of pure liquid B. तो मैं लिख देता हूँ, vapor pressure of pure liquid A and this is vapor pressure of pure liquid B. ठीक है? So now listen carefully. According to Raoult's law, for liquid A, PA is equal to XA into P naught A. Similarly, for liquid B, PB is equal to XB into P naught B. Clear? Is everyone clear with the equation? According to Raoult's law for liquid A, PA is equal to XA into P naught A, and liquid B, PB is equal to XB into P naught B. Yes or no? Please, any doubt? Okay. So now, total pressure of solution is given by the total pressure PT is equal to PA plus PB. PA plus PB. So आप observe कर सकते हो, we have equation for PA and PB. As you can see, PA का equation आपको सामने दिख रहा है, PB का equation आपको सामने दिख रहा है. क्या करेंगे? ये दोनों equation वहाँ पे substitute करेंगे.
तो मुझे क्या मिलेगा, PT इज इक्वल टू XA इंटू पी नॉट ए प्लस XB इंटू पी नॉट बी. Correct? Now, from this equation can be converted into one of the mole fraction, because we have learned that total mole fraction of any solution is always 1. Is always 1. That means we can say that XA is equal to 1 minus XB. So मैं XA की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे को इक्वेशन क्या मिलेगा, PT is equal to 1 minus XB into P naught A plus XB into P naught B. Now if I open the bracket, equation becomes PT is equal to P naught A minus P naught XB into P naught A plus XB into P naught B. ठीक है. Now if I arrange the equation, the equation become what? PT is equal to P naught A plus XB into P naught B minus XB into P naught A. Correct? Now we can take a common. Common क्या हो जाएगा, XB common हो जाएगा. So equation become what? PT is equal to P naught A plus XB common whole bracket P naught B minus P naught A. So this is what the equation which we have derived for the solution containing volatile solute. Volatile solute, correct? और can be written as, अगर हमने XB के जगह पे XA डाला होता तो इक्वेशन PT is equal to P naught B plus XA into P naught A minus P naught B. आप देख सकते हो totally reverse, total reverse. Clear? Is everyone clear with the equation derivation? So please note, आगे जो आप पढ़ने वाले हो इस नोट पे डिपेंड करेगा. इस नोट पे ध्यान रखना क्या लिख रहा हूं मैं. The solution which obey Raoult's law over the entire range of concentration is called ideal solution. Is called ideal solution. That means जो हमने equation derive किया हुआ है, अगर वो equation को solution obey करता है, मतलब follow करता है, that means it is called as ideal solution. ठीक है. But अगर नहीं follow कर रहा है, so there can be a deviation from the ideal behavior. That can be positive deviation or it can be negative deviation, and that will say in the next slide. Okay, so is everyone clear with the derivation, how we have derived the equation for the solution containing volatile solute, and what is the ideal solution after mixing two liquid? If the solution obey Raoult's law, it is said to be ideal solution. If it do not obey the Raoult's law, it is not called as ideal solution, and it will show some positive deviation or negative deviation. Clear? So if I talk about ideal solution,
तो उसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो कैसा दिखेगा, ध्यान से देखो। तो कंसिडर this is vapor pressure of liquid A and this is vapor pressure of liquid B. Okay, as B is volatile, that means B will have more vapor pressure as compared to liquid A. तो कंसिडर करो कि ये पॉइंट आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी का है, प्योर वेपर कंपोनेंट लिक्विड बी, एंड यहाँ पे है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए. तो एज बी इज मोर वोलाटाइल, तो बी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है. एंड यहाँ पे ये पॉइंट पे कंसिडर करो कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए 1 है एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इज 0. अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ लिक्विड ए प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में इट इज ओनली लिक्विड ए. सिमिलरली राइट साइड में मैं बोलूंगा ये पॉइंट पे कि एक्स ए 0 है और एक्स बी 1 है. इसका मतलब क्या प्रेजेंट है, लिक्विड बी, लिक्विड बी. और सेंटर पॉइंट, फॉर एग्जांपल सेंटर पॉइंट में एक्स ए 0.5 है और एक्स बी 0.5 है, मतलब कंपोनेंट दोनों प्रेजेंट है सेंटर में. दैट मीन्स ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट क्या कर रहा है, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए ग्राफ, मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए ग्राफ, लिक्विड ए decreases and liquid B increases. Mole fraction of liquid A decreases and mole fraction of liquid B increases. Yes or no? तो अगर मैं इसका ड्रॉ करूं तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा. दिस इज फॉर लिक्विड A and this is for liquid B, as you can see. So this is for liquid B, that means PB is equal to XB into P naught B, correct? And ये जो curve है, this is for the liquid A, so PA is equal to XA into P naught A. Clear? समझा सबको? So very clear. This is liquid A and this is liquid B. But I have an equation that PT is equal to PA plus PB. PT is equal to PA plus PB. तो जब हम दोनों को मर्ज करेंगे, दोनों के वेपर प्रेशर को ऐड करेंगे, PA plus PB करेंगे, तो मुझे कुछ ऐसा कर्व मिलेगा. ध्यान से देखो, मुझे ये दोनों का पॉइंट जो है वो मर्ज करके एक ऐसा कर्व मिलेगा जो कि आप देख सकते हो. So this equation, this curve is for PT is equal to PA plus PB, PA plus PB. So अगर ग्राफ कुछ ऐसा आता है सोल्यूशन का, that is called as ideal solution. So this graph is for ideal solution, as you can see. ठीक है? So what are the conditions? Condition for ideal solution. Please ध्यान से सुनना. Condition for ideal solution. Number one condition, after mixing two liquid, the change in volume should be 0. Second condition, after mixing two liquid, the enthalpy
should be zero. That means then there should be no absorption or release of heat. Heat absorb भी नहीं होना चाहिए और heat release भी नहीं होना चाहिए. ठीक है. Third condition, there should be no chemical reaction. अगर chemical reaction हो जाता है दो liquid के बीच में तो वो ideal solution नहीं होगा. Fourth condition, we say the total pressure PT and that should be equal to PA plus PB. अगर वो equal नहीं आता है तो वो ideal नहीं होगा और that means it will show positive or negative deviation. Point number 5, delta S mixing. Now what is delta S mixing? Delta S का मतलब होता है जो कि entropy measure करता है. S indicate entropy. I'm writing here entropy. Entropy means randomness or disorderly system. And according to this condition, after mixing two liquid, entropy should increase. That means delta S should be greater than 0. That means entropy should increase. And point number 6, delta G should be less than 0. इसका मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना चाहिए. तो ये सब कंडीशंस किसके लिए है? आइडियल सॉल्यूशंस के लिए. ठीक है. So we can take an example as, if I talk about the examples, the example we can take as benzene plus toluene, then CCl4 plus SiCl4, then we have chlorobenzene plus bromobenzene. So ये सब आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल हैं. So N-hexane plus N-heptane, ethyl bromide, C2H5Br plus C2H5Cl. So these are what the examples of ideal solution. चलो. So if what ग्राफ का नेचर कैसा होगा अगर वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है तो चलो देखते हैं. So next for non-ideal solution. तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा नॉन आइडियल के लिए वो देखते हैं. So this is vapor pressure of liquid A. This is vapor pressure of liquid B. Again, this is vapor pressure of liquid A. And this is vapor pressure of liquid B. ठीक है. तो आइडियल का नेचर कैसा था अगर आपको याद होगा. देखो ये पॉइंट था लिक्विड ए का, ये पॉइंट है लिक्विड बी का.
ये सब स्ट्रेट लाइन मिलेगी, करेक्ट। ठीक है, ये आइडियल नेचर, अगर ऐसा ग्राफ आता तो आइडियल नेचर, बट ऐसा नहीं आ रहा है, तो क्या कैसे मिलेगा? देखो, पॉसिबिलिटी है कि ऐसा मिले। मतलब जो कर्व है उसके अलग से ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, दैट मीन्स वी कैन से दैट ऊपर क्यों मिल रहा है? बिकॉज पी टी यहाँ पे ग्रेटर है पी ए प्लस पी बी से, करेक्ट। यहाँ पे क्यों ग्रेटर मिल रहा है? दैट मीन्स वी कैन से दैट पी बी इज ग्रेटर देन एक्स बी इंटू पी नॉट बी। क्लियरली यहाँ पे क्यों ग्रेटर मिल रहा है? बिकॉज पी ए इज ग्रेटर देन एक्स ए इंटू पी नॉट ए, करेक्ट। And this is called as what? Positive deviation. So this is called as positive deviation. But अगर नेचर कुछ ऐसा मिलता है, देख सकते हो नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव डिविएशन। क्या बोलते हैं? नेगेटिव डिविएशन। दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव डिविएशन। एंड ये कब मिलेगा? टोटली अपोजिट कर दो, यहाँ पे पी टी विल बी लेस देन एडिशन ऑफ पी ए प्लस पी बी, करेक्ट। एंड दिस इज यहाँ पे पी बी is less than xb into p naught b, and यहाँ पे pa is less than xa into p naught a. Clear? Is everyone clear? So condition that can be for the positive deviation, that is delta v mixing, जो कि हमने आइडियल के लिए 0 बोला था, that will be greater than 0 for the positive deviation. For negative deviation, delta v mixing should be less than 0. Second, delta h mixing will be greater than 0. यहाँ पे negative deviation में delta h mixing will be less than 0. And the third important one जो हमने लिखा है, pt is greater than pa plus pb, correct. And यहाँ पे क्या हो जाएगा? pt is less than pa plus pb, correct. समझा सबको? Okay. Now if you see the examples, example for the solution which show positive deviation are like ethanol, ethanol plus cyclohexane, then we have chloroform, CCl4, sorry, carbon tetrachloride plus benzene. Then we have examples like benzene plus acetone. So this also is some example for the solution showing positive deviation. And if I talk about the examples of the solution which show negative deviations are chloroform, CHCl3 plus benzene. Second, CHCl3 plus acetone.
HCl plus water, chloroform plus acetic acid. समझा सबको? So as you can see, यहाँ पे common factor है chloroform mostly show what a solution of negative deviation, correct? So this is what basically indicate difference between ideal solution and non-ideal solution. अगर ideal solution होगा तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बट अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो उसमें कौन सा डिविएशन मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, दैट विल बी शोन बाय द ग्राफ, द कंडीशंस. क्लियर? इज एवरीवन क्लियर? So azeotropic mixture. Now what is azeotropic mixture? This is what the mixture of the liquids which can't be separated by normal distillation or fractional distillation, but can be separated by azeotropic distillation. Okay? So we can define as azeotropic mixture the component from the azeotrope component from the azeotrope can't be separated by fractional distillation, but can be separated by azeotropic distillation. अब ये वो सोल्यूशन होते हैं जिनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत नियर होती है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत नियर होगा, बट इसमें आइडेंटिफाई कैसे करें? दो टाइप की एजियोट्रॉपिक होती है, दो टाइप, ठीक है. एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप और दूसरा होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट azeotrope. Now, how to identify which one is minimum and which one is maximum? तो आपको बता दो, maximum that means the solution showing large negative deviation. Negative deviation and minimum के लिए आ जाएगा large positive deviation. तो जो positive deviation शो करेगा वो आपका हो गया minimum boiling point azeotrope, and जो large negative deviation शो करेगा that is maximum boiling point azeotrope. Clear?